Question number 7. The floor of a building consists of 3000 tile. किसी बिल्डिंग के फर्श पे बहुत बड़ा हॉल है. How many tiles are there? 3000 tiles which are rhombus shaped. सभी टाइल्स की शेप क्या है? rhombus. And each of diagonal, उन टाइल्स का डायगनल्स, each of its diagonals are 45 and 30 centimeter. Find the total cost of polishing the floor if cost per meter square you have given. Clear? कोई भी फ्लोर है आपके पास, यू डोंट नो रेक्टेंगुलर और दिस, बट इसमें जो टाइल्स लगी हुई हैं आपके पास, दे आर rhombus shaped. तो rhombus शेप की 3000 टाइल हैं, बट एक टाइल का आपको डायगोनल्स 45. If this is 45, it is 30. So what you will do? Diagonal of rhombus shaped tile, single tile का D1, diagonal D1 45 centimeter and diagonal D2 you have given 30 centimeter. तो इस एक टाइल का एरिया क्या निकालेंगे आप? You know the area of rhombus. Area of rhombus shaped tile. Area of tile will be, क्या होता है rhombus के एरिया? Half of D1 into D2. So it will be half of 45 into 30. Clear? So students, 215 ja, then multiply 45 into 15. It will be what? 675. You can multiply or remain as it is. So it's 675 centimeter square. Area of one tile. But how many tiles are there? 3000. So area of 3000 tiles. एक टाइल का है 675. So area of 3000 tiles will be, multiply 3 5 ja 15, carry 1, 3 7 ja 21 और carry 22. So carry add करा हमने, 3 6 ja 18, what? 19 20. Again 3 5 ja 15, carry 1, 3 7 ja 21 और 122, carry 2, 3 6 ja 18, 18 और 2 20, and these three zeros as it is centimeter square. Now next question is, find the total cost of polishing the floor if cost per meter square is rupees 4. Now convert this in meter square. Cost per meter square is rupees 4. So how to convert in meter? 2025,000 divided by centimeter square means centimeter into centimeter. So in centimeter, 1 centimeter, how many meters are there? 1 upon 100 meter and 1 upon 100 meter. So it will be 12340 meter square. So to convert in meter, you will divide with 40. Then you can write this centimeter square into meter square. So these 30 cancel with these 30. So it's area of 3000 tiles 202.5. Then cost per meter square is rupees 4. Cost of 1 meter square is rupees 4. So total cost will be this area
multiplied by 4. So student, 2 2s are 4, 2 5s are 10. So 5 4s are 20. Then this. So 405 into 2. 2 5s are 10. Carry 1. 201. 2 8s are rupees 810. Clear? It's rupees 810. और आपको एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए तो आप इतना टाइम नहीं वेस्ट करोगे 1 मार्क्स का. देन हाउ यू विल कैलकुलेट? इन शॉर्टकट आई टेल यू नो, आपको एक टाइम है ये, इसको पॉलिश करना है. उसका आपके पास गिवन है कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर. इट इज 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेड्थ. So area of this tile is 1 meter square. So cost of 1 meter square is 4. So what will be the total cost? Total cost will be the total area multiplied by 4. Clear? So you will find total area. Area of one tile. Again 1 by 2, 45 into 30. Area of one tile. So area of 3000 tile multiplied by 3000. So cost meter square में given है. At this area in centimeter, convert in meter, divide it by 40 and total cost per meter square की है 4. तो इतना मीटर स्क्वायर है, उसकी कितनी होगी? multiplied by 4. These two 0 with these two 0, this 0 and this 1. और ये आपके पास जो 2 है नीचे, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. So you will get how? 3 into 3 into 2. How much? 9 2 ja 18. So 45 into 18. 45 into 18. डायरेक्ट रुपीज इट इज 810. जब आपकी कैलकुलेशन प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपका फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन. ये हमने जो स्टेप लिखे वो एक स्टेप में कर दिया. एरिया ऑफ वन टाइल मल्टीप्लाइड बाय 3000. एरिया ऑफ 3000 टाइल कन्वर्ट टू मीटर स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई बाय 4 टू फाइंड द टोटल कॉस्ट, बिकॉज कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4. सो रुपीज 810 is the answer, but only to solve objective type. Otherwise in exam, if it is of 2-3 marks question, then you will do like this. Clear?